अस्सलाम वालेकुम। आज से हम क्लास फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्लास फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट है स्टाइकोमेट्री। हम इसको स्टाइकोमेट्री भी कहते हैं, कहीं पे हम इसको स्टाइचोमेट्री भी कहते हैं। जिस तरह आप चाहे आप लोग इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्टाइकोमेट्री ही कहूँगा। सो फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है स्टाइकोमेट्री, उसमें सबसे पहले हम वर्ड स्टडी करते हैं। वर्ड स्टडी करने से मुराद ये है कि स्टाइकोमेट्री है क्या, कौन से लैंग्वेज का वर्ड है। तो स्टाइकोमेट्री, इफ आई ड्रा अ स्ट्रेट लाइन हेयर, it means stoichiometry is the combination of two words, and it is the combination of two Greek words. First is stoichion. First word is stoichion. Second word is metron. मेट्रोन को हम मेट्री भी कह सकते हैं। सो स्टाइकोमेट्री is the combination of two words. स्टाइकियोन, स्टाइकियोन का मतलब है, स्टाइकियोन की मानी है एलिमेंट। एंड सेकंड वर्ड इज मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट, मेजरमेंट। सो स्टाइकोमेट्री मीन मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे जो वर्ड एलिमेंट हमने यूज किया है, एक्चुअली यहाँ पे इस एलिमेंट से मुराद है पार्टिकल। और पार्टिकल आपको मैं बताता चलूं कि पार्टिकल दो टाइप्स के होते हैं ऑन द बेस ऑफ साइज। एक को हम माइक्रो पार्टिकल कहते हैं और दूसरे को हम मिक्रो पार्टिकल कहते हैं। माइक्रो जैसे नाम से जाहिर है स्मॉलर इन साइज, और मिक्रो नाम से जाहिर है लार्जर इन साइज। तो गोया इसका मतलब हो गया कि जो माइक्रो पार्टिकल है दे विल बी स्मॉलर इन साइज, और जो मैक्रो पार्टिकल है दे विल बी लार्जर इन साइज। चूंकि माइक्रो पार्टिकल का साइज स्मॉलर है, सो दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और मैक्रो पार्टिकल का साइज लार्जर है, सो दे कैन बी सीन विदाउट एनी माइक्रोस्कोप। यहाँ पे अगर हम स्टाइकोमेट्री की बात करते हैं तो जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्टाइकोमेट्री का मैक्रो पार्टिकल के साथ कोई काम नहीं है। स्टाइकोमेट्री डील विद द माइक्रो पार्टिकल, एंड इन अ फील्ड ऑफ केमिस्ट्री माइक्रो पार्टिकल मीन व्हाट? माइक्रो पार्टिकल मीन एटम, microparticle mean molecule, microparticle mean formula unit, microparticle mean ions, microparticle mean free radical. So now we can say that what is stoichiometry? Stoichiometry is measurement. Stoichiometry is measurement of microparticle. Stoichiometry is measurement of atom, molecule, formula unit, ions and radical, free radical की बात कर रहे हैं। अब एक सवाल है वो ये है कि चलो यहां तक तो हम सीख गए कि स्टाइकोमेट्री मीन मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल, लेकिन सवाल ये है कि ये पार्टिकल कहाँ पे होंगे। सो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है, और उस प्रैक्टिकल प्रोसेस में
रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन react with oxygen and form carbon dioxide. So this is a practical process, and in this practical process carbon dioxide is formed by the combination of carbon and oxygen in the presence of suitable condition. So that practical process in which reactants combined with each other in the presence of suitable condition of temperature, pressure, state, and catalyst, that practical process is called chemical reaction. This process is called chemical reaction. Now, in chemical reaction, atom is present. In chemical reaction, molecule or compound is present. Now this is atom or this is element, and this is molecule. Atom can be represented by a symbol. Atom can be represented by a symbol. What is symbol? The short and standardized abbreviation used for the representation of an atom or element is called symbol. The standardized and short abbreviation used for the representation of an atom or element is called symbol. Symbol is made up of a single letter, or it may be made up of two letters. For hydrogen, it is H, single letter. For oxygen, it is O, single letter. For fluorine, it is F, single letter. But in case of that, sodium, so it is two letter. Calcium, Ca, two letter. First letter is capital while second letter is small. And now you should also know that the concept of the symbol was introduced by a Swedish scientist named as Berzelius. Similarly, as the atom is shortly represented by the symbol, you should also know that molecule is shortly represented by formula. Like we have glucose, that is C6H12O6. Like we have water, this is H2O. So C6H12O6 is the formula of glucose, while H2O is the formula of water. Now question is that what is formula? Formula is collection of symbol. Formula is actually the collection of symbols with a subscript. And this subscript tell us about the number of atoms of each element present in a molecule. So what is formula? Formula is a collection of symbols with a subscript. Mean here this C is the symbol of atom, H is the symbol of atom, O is the symbol of atom. But the 6 of carbon, 12 of hydrogen, and 6 of oxygen, this is actually subscript, and it tell us how many number of atoms are present. Like we have 6 carbon atom in glucose, 12
hydrogen atom in glucose and 6 oxygen atom in glucose. Formula not only tell us about the kinds of atom. Formula tell us about the kinds of atom. Formula tell us about the number of atoms. Formula tell us about the ratio between the atom. Formula tell us about the structure of molecules. So, carbon and oxygen react to form carbon dioxide. The symbol of carbon is C. The symbol of oxygen is O. And the formula of carbon dioxide is CO2. Now, this is the chemical reaction. Carbon and oxygen react to form carbon dioxide. And what is this? This is the symbolic representation. This is the symbolic representation of chemical reaction. And you should know that symbolic representation of a chemical reaction is called chemical equation. The symbolic representation of chemical reaction is called chemical equation. Stoichiometry not concerned with the chemical reaction, but stoichiometry deal with the study of chemical equation. Stoichiometry is concerned with the chemical equation. Question is that why is stoichiometry not concerned with the chemical reaction and why stoichiometry is concerned with the chemical equation? या सवाल ये है कि what is the main difference between chemical reaction and chemical equation? Chemical reaction is a practical work in which reactants combine to form the product, while chemical equation is the theoretical work used to represent this experimental process used for the synthesis of product. Now, we have two types of chemical equation. We have two types of chemical equation. First one is called balanced chemical equation, while the second one is called unbalanced chemical equation. Two types of chemical equation: balanced chemical equation and unbalanced chemical equation. The chemical equation which follow law of conservation of mass. Chemical equation which obey law of conservation of mass, this is called balanced chemical equation. क्या मतलब हो गया इसका? आसान सी बात है. The equation in which number of particle in the reactant is equal to number of particle in the product. ऐसा इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर हो, इस इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं. जस्ट लुक इनटू दैट. वी हैव कार्बन एंड वी हैव ऑक्सीजन. दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स and that one is called product. Now look into that. In product we have only one carbon atom. And reactant we have only one carbon atom. In product we have also one carbon atom. In reactant we have two oxygen atom. In product we have two oxygen atom. So number of atom in the reactant is equal to number of atom in the product. So such types of equation is called balanced chemical equation. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब ये इसका अपोजिट. तो आसान सी बात हो गई है कि जो इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ना करे. क्या मतलब हो गया? मीन नंबर ऑफ पार्टिकल इन द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इन द प्रोडक्ट.
This is called unbalanced chemical equation. In a field of chemistry and stoichiometry, we always need a balanced chemical equation. So stoichiometry is concerned with a balanced chemical equation. आपको ये तो मैंने एक्सप्लेन कर लिया कि स्टाइकोमेट्री में हमें इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें स्टाइकोमेट्री में बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत होती है। तो लेट्स सपोज ये एक इक्वेशन आपके सामने मैं लिखता हूँ कि ये हमारे पास 2H2 plus O2 combined with each other and they form 2H2O। इसको अगर आप देखिए तो ये केमिकल इक्वेशन भी है और ये ऑलरेडी बैलेंस भी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन है। सो द इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जरा गौर से देखें। According to this balanced chemical equation, 4 grams of hydrogen react with 32 grams of oxygen and they form 36 grams of water. According to this balanced chemical equation, अगर हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन हो तो जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 36 ग्राम बनेगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि चलो हम 4 ग्राम के बजाय 8 ग्राम रिएक्टेंट ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन तो इधर पे रिएक्टेंट का काम कर रहा है। तो जब हमारे पास 4 ग्राम रिएक्टेंट था तो 36 ग्राम वाटर बन रहा था। अब जब हमने रिएक्टेंट की क्वांटिटी को डबल कर ली, 8 ग्राम कर ली, तो हमारे पास 72 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे अगर मैं इधर पे 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लूं, यानी क्वांटिटी हाफ करूं, तो जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो कितना बनेगा? दिस इज 18 ग्राम बन जाएगा। यानी जो आखिरी बात आपसे करने जा रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूं, वो ये है कि आप जरा इसको देखिए। अगर मैं रिएक्टेंट की क्वांटिटी को चेंज करूं या इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, तो जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी if we change the quantity of reactant in a balanced chemical equation, the quantity of product is also changed। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, और इस रिलेशनशिप को, जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्वांटिटी के दरमियान होता है, इस रिलेशनशिप को हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। दिस रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड quantitative relationship, and the study of this quantitative relationship between reactant and product in a balanced chemical equation is called stoichiometry. So this is the final and complete definition of stoichiometry. Once again, how can we define the stoichiometry? Stoichiometry may be defined as such: the branch of chemistry deal with the study of quantitative relationship between reactant and product and a balanced chemical equation. Thank you.